Hello, everyone. I hope I am audible and visible. Yes or no? Now I think everything seems to be fine. Hello, Rishpan. Hi, Daksh. No, the streaming key was not working, so थोड़ा सा late हो गया. But let's come to the point. आज अपन ज़्यादा वो नहीं करते. So, social media कल तीन चार चीजों पे भरा हुआ था. Right. एक तो चाचा Kim is appointed as the new president of State Affairs. Yes, चाचा Kim got new post. तो और उसके बाद वो नया वॉर भी चाहिए उनको एंड सेकंड दैट वाज इन डिस्कशन वाज क्वाइट सिंपल कि भैया ट्रम्प ने टेक्निकली सरेंडर कर दिया. Yes, I mean, the thing is कि Donald Trump who has given an ultimatum for 48 hours to Iran कि अगर 48 hours के अंदर आपने Strait of Hormuz नहीं खोला तो we are going to destroy the power plants. So within 48 hours, just Donald Trump just mentioned कि we are having talks that is going on for next 5 days. We are not going to what we can say attack on Iran power plant or any place. Right? Some strategists are saying कि because market is opening very back है ना चाहे वो यूएस का हो चाहे दुनिया भर के मार्केट हो तो वहां पे द इन्वेस्टर्स आर लूजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू काउंटर दैट टू व्हाट वी कैन से टू लाइक काउंटर द पैनिक दैट इज बीइंग क्रिएटेड उन्होंने ये बात बोली है जिससे मार्केट बहुत ज्यादा लॉस न में ना जाए and after telling this that they are not going to attack on Iran for next 5 days the market actually like rises at certain point. तो एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि ही विल कंटिन्यू डूइंग दैट बट बिफोर दैट उसने अपनी मार्केट को संभालने के लिए इन्वेस्टर्स के पैसे को संभालने के लिए यूएस में ये सारी चीजें बोली हैं. ऑन द अदर हाफ ईरान का सीधा कहना है कि भाई वी आर नॉट हैविंग एनी पर्टिकुलर डिस्कशन ऑफ द सीज फायर और एनीथिंग दैट इज entirely the like created by or framed by Donald Trump. We have nothing to do with the ceasefire or anything. This is a fake news. राइट ऑन द अदर हाफ ट्रम्प इज सेइंग कि भैया देयर इज अ टॉप ऑफिशियल जिससे पीस की बात चल रही है. सो थिंग्स आर गेटिंग इनटू सम फनी वे है ना. और एवरी डे बाय द इवनिंग जो डोनाल्ड ट्रम्प है उनका फेवरेट सॉन्ग हो जाता है सारी उम्र आता मैं जोकर में बनिया खड़ा. Right, that is what is happening. So, West Asian conflict and global impact is going on. मैंने कल अपने वीडियो में जो वीकली करंट अफेयर्स था we discussed about how the particular conflict is causing global impact and especially India में क्या impact रहा है. So if you have missed that particular video, make sure to watch it again. Right. Then our Prime Minister Modi gave a speech right on parliament about this what we can say energy security lpg crisis technically the west asian conflict what is india's preparation and other particular state. Yes, daksh मतलब आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया का मार्केट क्रैश कल जो हुआ है. uh, अगर मैं मनी कंट्रोल एंड सम अदर वेबसाइट्स को रेफर करूं तो कल मैंने पढ़े कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल एट नाइट and everybody is calling it a bloodbath in the market. Right, so there's a bull grip, there's a bear grip, that's what's going on the bear grip. We lost approximately 14 lakh crore yesterday from the market, so it's a huge mess. हम बात करेंगे उसके आज डिटेल में. सो मोदी जी का अपना स्पीच था इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे. व्हाट आर द implications, what he intended to say, what can we do, right, technically. सो इस पे अपन वो करेंगे एंड वुमेन रिजर्वेशन जो बिल है डिलिमिटेशन उस पर डिबेट हुई है. सो इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं. यस. सो बिफोर इलेक्शन 2023 में ही जो वो है क्या कहना चाहिए मोदी गवर्नमेंट दे बॉट अ women reservation bill which actually is talking like the 33% reservation in the state legislative assembly and Lok Sabha and parliament, right, for the women. And abhi for now the Lok Sabha seats are 543. Right, it will increase to 816 after delimitation. Now, what is a delimitation process? The thing is that we elect our representative on the basis of population. Hmm.
and the population is continuously increasing. So that clearly means the number of member of parliament we are electing, they are less. So they have to be increased. So after census, we are going to see a delimitation process in which number of seat distribution is going to change. And after the delimitation, 543 seats will become 816 seats. This is what likely to be the data of the Lok Sabha. Out of these 816 seats, 273 seats must be reserved for women candidate. अगर वो 33% वाला कोटा जो है उसको रीच करना है, राइट? तो सिंपल से उसमें जो गवर्नमेंट का प्लान है, डिलिमिटेशन, राइट, दैट दिस डिलिमिटेशन इज नॉट गोइंग टू बी on the basis of current census 2025, 26, 27. This is going to be on the basis of 2011 census, राइट, ये ध्यान रखना। सो गवर्नमेंट जो है, अगर गवर्नमेंट खुद के रिस्पॉन्स देखे जाए पार्लियामेंट में, तो दे सेड कि वी आर प्लानिंग टू डिलिमिटेशन बेस्ड ऑन 2011 census to implement on the women reservation bill. The Lok Sabha seats may increase from 543 to 816. 273 seats will be reserved for the women. अब ये जो पर्टिकुलर पूरा का पूरा पॉइंट था, उसमें जो चीजें थी उसकी अपन बात करें, तो आर्टिकल 82 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए थे, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन एक्ट, और एक इम्बैलेंस रिप्रेजेंटेशन का भी डिबेट है। आई मीन जो नॉर्थ इंडिया है, इट्स पॉपुलेशन हैव increased drastically, right? While South Indian state have did a great job to curb the population, to stop the population growth. So that clearly means that North India will get more number of seats, right? And the South India will get the less number of seats. So if South Indians are getting less number of seats, their representation in the parliament will become less. So just a simple scenario. If I am having good hold in the northern state, during election, and I win lots of seats in the what we can say election in the North India, then I will become the prime minister. I don't even need South India, right? हाँ, नहीं, 2011 के सेंसस में क्यों अमेंडमेंट होगा, दक्ष? They are going to use the data of 2011 census, right? Yes. So let's say 2011 census में 121 crore जो थे, that was the population of India. So union territories and state जो particular legislative assemblies हैं उनके numbers, number of member of parliament के numbers, इनको change किया जाएगा, right? They are not going to use the latest data of 2025-26 census. Getting? So, Abhi, for now, people from South India or the states from South India, they are against this delimitation process because that will reduce their representation in the parliament. So, अभी उस पे debate चल रही है. Let's hope for the best कि कुछ अच्छा निकल के आ जाए भैया. Women reservation is one of the things that actually I support because I think women have more, what we can say, capability to lead, and महिलाओं का होना बहुत जरूरी होता है भाई साहब। स्टॉक मार्केट क्रैश के बारे में हम कल की मतलब कल का जो मार्केट क्रैश हुआ उसके बारे में तो हम डिटेल में बात करेंगे। कितना हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना फायदा, क्या कितने परसेंट हुआ, राइट, व्हाट आर द रीजंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। सो देर आर टू थ्री मेजर केसेस जो आज हम डिस्कस करेंगे। वन ऑफ, मतलब डिस्कस नहीं करेंगे बट जो न्यूज में है, वन ऑफ देम इज लिकर स्कैम, राइट, यस, एंड अनदर वन इज अनिल अंबानी। इन दोनों के केस में समन भेजे गए। इन दोनों के केस में जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑब्जर्वेशन में इन दोनों केसेस को रख रही है कि कंटिन्यू हम देखते रहेंगे, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना। ना कस्टोडियल डेथ का एक केस जो है आज फिर इंपॉर्टेंट रहा है। तमिलनाडु में 9 पुलिसमैन, राइट, तमिलनाडु में 9 पुलिसमैन जो है उनको क्या किया गया है, कन्विक्ट किया गया है इन अ कस्टोडियल टॉर्चर डेथ, right? What is a custodial torture death? So simple सी भाषा में, if somebody is getting arrested, they according to constitution and law they are not supposed to be subjected for the what we can say torture, any kind of torture. But यहाँ पे ऐसा हुआ कि इतना torture किया गया कि they died. So 9 policemen were arrested, and उसके अलावा कोई खास वो नहीं है। इलेक्शन चल रहा है केरला में। कुछ 1202 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है, एंड पुदुचेरी जो है उसमें कॉन्फ्लिक्ट जारी है। 6 शेड्यूल का जो पर्टिकुलर वो है ट्राइबल ऑटोनॉमी का, वो लड़ाई झगड़े चालू ही हैं।
So one of the particular thing is कि Karnataka government is very soon getting a legislation based on the ban of social media for children. Right, I'm eagerly waiting for this. मतलब जल्दी से जल्दी आ जाए, है ना? दो पीपल आर सेइंग राइट टू प्राइवेसी और बहुत सारी चीजें जो हैं उसका कंसर्न है, राइट टू चॉइस का कंसर्न है, वगैरह वगैरह. बट आई एम गोइंग टू वेलकम दिस पर्टिकुलर बिल, दैट्स फॉर श्योर. राइट, सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट न्यूज. अब चलो एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो एड्रेस किया है हमारे नेशन को, राइट, कल पार्लियामेंट में, उसका क्या इम्प्लीकेशन है, क्या मतलब है. सो व्हाट इज, हाय भाविक, गुड मॉर्निंग. व्हाट इज इंडिया गोइंग थ्रू, सबसे पहले उसकी बात करते हैं. इंडिया इज गोइंग थ्रू, देयर आर लाइक 4 5 नेगेटिव इवेंट. First of all, market crashes can be seen. Second, energy crisis is there. Third, the food crisis is on the way. Fourth, that is inflation, जिसके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा है. And then there is a huge amount of import जो हमारा गल्फ रीजन में जाता है. राइट, आई एम नॉट श्योर, बट एक एक्यूरेट डेटा जो मुझे कल मिला था, दैट वाज अप्रोक्सीमेट 1.5 to 2 लाख करोड़ का जो मंथली एक्सपोर्ट हम गल्फ में करते हैं, दैट इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड. राइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो गल्फ से हमारे यहाँ पैसा आता है, राइट, दैट इज ऑल्सो बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड. सो इंडिया इज फेसिंग दीज many challenges simultaneously due to one shit person, Donald Trump, knows nothing about Iran and he just decided कि आज हम अटैक करेगा, आज अटैक तुम्हारा भाई करेगा वाला सी. राइट, सो यहाँ पे चीजें जो है वो प्रॉब्लम में हुई. एंड कल का उनका एड्रेस जो है मैंने काफी वो सुना. तो he mentioned about the achievement. So he said there is a safety of Indian citizen. He mentioned approximate 3.75 lakh people, right? Indians have already returned safely from the region. He personally spoke with the several West Asian head of state to ensure the security of nearly 1 crore individuals, Indians living and working in the Gulf. तो ये एक अच्छी अचीवमेंट है कि भाई हमने सेफ्टी सिक्योरिटी अपनी जो है, जो लोग हैं जो वहाँ रह रहे हैं, सिटीजन्स हैं, वहाँ के लिए उन्होंने काफी काम किया. एंड आई एग्री विद दिस. whenever this kind of situation arises, हमारी गवर्नमेंट, हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स बहुत अच्छा काम करती है. आई मीन कितना भी मजे लेने वाला बात हो, वो बहुरखवादी पापा वाला, बट यस, अनडाउटली we did our best to get our citizen and students out of the Ukraine. बहुत अच्छा तो वो सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं था, बट वी गेट मेजोरिटी ऑफ आवर स्टूडेंट्स. सो कहीं ना कहीं मैं उस चीज के लिए गवर्नमेंट को कहूंगा कि हाँ भाई, यू आर डूइंग ग्रेट. सेकंड, ही टॉक अबाउट द मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ट्रेड. Maritime security and trade, that clearly means कि we are talking about the trade from the sea, trade route which are going to sea. So उनका सीधा मानना था कि any disruption in the international waterways, specifically the Strait of Hormuz, as unacceptable. Right, the Indian naval and diplomatic efforts are focusing to ensure the safe passage for the commercial ship. उनका कहना है कि जो भी मैरीटाइम सिक्योरिटी या जो भी पर्टिकुलर चीजें, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है, राइट, इसका बंद होना, दैट इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल. एंड उनका कहना है कि जो इंडियन नेवल फोर्सेस हैं, जो अदर पर्टिकुलर वेसल्स हैं, उनके सेफ पैसेजेस के लिए वी आर इंश्योरिंग द डिप्लोमेटिक वेज. राइट, फिर उन्होंने एड्रेस किया अबाउट द एनर्जी सिक्योरिटी. आई वॉज वेटिंग फॉर दिस एंड दिस ओनली, बिकॉज दिस इज समथिंग जिसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है. If the fuel is not available, the country will stop, right? If the fuel is getting costlier, the things are going to get costlier, and इसके कारण काफी ज्यादा लॉस होगा. So, अब बात करते हैं क्या उन्होंने बोला है. उन्होंने बोला टू मिटिगेट ग्लोबल सप्लाई शॉक, द गवर्नमेंट इज प्रायोरिटाइजिंग डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन. सो उनका सीधा कहना है कि भैया, yes, there is a particular shock in the international market, right? So we decided to prioritize the domestic LPG production, right? He mentioned and has diversified the oil import sources from 27 to 41 countries. So करीब 41 countries से, है ना, जो है वो ऑयल डाइवर्सिफिकेशन या ऑयल आने के
उन्होंने बात रखी है, बट ही एडिड समथिंग जो कि बहुत मुश्किल, मतलब जिस पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है. सो ही एडिड कि वी डाइवर्सिफाइड ऑयल इंपोर्ट सोर्सेस फ्रॉम 27 to 41 countries ओवर द लास्ट डिकेड. मतलब लास्ट डिकेड से उन्होंने इस चीज को वो किया है, बट स्टिल द क्राइसिस इज देयर, है ना. इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स अ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व ओवर 53 लाख मीट्रिक टन. अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है. द डिस्कशन इज, द डिबेट वाज अबाउट द 43 53 lakh metric ton. People were saying that there were 5 lakh metric ton, which is the daily requirement of India. So that is like approximate 10 days oil reserve. Some people were saying this is just an emergency reserve. India is having approximate 273 lakh million metric ton. ऐसा कुछ भी reserve जो है वो extra रखा हुआ है. That might be sufficient for next 3 months. There are tons of discussion. अभी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रिजर्व जो नेचुरल गैस मिनिस्ट्री है उसके वेबसाइट को खंगाल रहा था रात में भी, एंड इवन इन द मॉर्निंग, बट आई डिडंट गेट स्पेसिफिक डेटा अबाउट द रिजर्व, राइट. यस, कि कितना रिजर्व है, व्हाट इज द इमरजेंसी रिजर्व, व्हाट आर दी अदर पर्टिकुलर रिजर्व. आई डिडंट गेट एनी काइंड ऑफ डेटा, तो आई कीप सर्चिंग. हो सकता है मैं सही जगह नहीं सर्च कर रहा हूँ, बट आई सर्च विद द कीवर्ड्स. व्हाट आई एम गेटिंग, द डेटा आई एम गेटिंग इज फ्रॉम दोज न्यूज वेबसाइट्स which I don't even trust. And I'm not going to take the names, so I'm not going to say anything. जब तक until unless I am not getting the data from the official government sources, मैं उस पर बात नहीं करूंगा. So एनर्जी क्राइसिस को उन्होंने क्या कहना चाहिए एड्रेस किया, but can't purely blame him. Even OPEC and OPEC plus countries are suffering. Definitely. What I told you yesterday that we all are really with our government. This is not the war we started. Right. So if there is a particular problem, there is a particular issue, let's address this and let's fight it together. But if you won't even address the issue, right, and you will get into that denial mode, right, then there is a problem. Now, what is the first thing that we do to solve a problem? Accept the problem, right? If you're not accepting the problem, that is something is called solving us. I mean, I have friends are kind of party workers and they had their own opinion, right? उनके सीधे तौर पे ये मानना है कि पहले जब मैं उनसे डिबेट करता था कि भाई यार इंटरनेशनल क्रूड ऑयल जो है, इंटरनेशनल क्रूड जो है सस्ता है, सो फ्यूल शुड बी व्हाट वी कैन से फ्यूल कॉस्ट शुड बी रिड्यूस्ड. फिर 20% एथेनॉल मिक्स है, एथेनॉल ब्लेंड है, that is also supposed to give us like the amount जिसमें कि हमें थोड़ा सा सस्ता मिलना चाहिए. तो they used to be like there is not just the crude oil factor that is क्या कहना चाहिए, what we can say responsible for the petrol price. Other factors are there, but now the same people, same experts are saying कि crude oil का price बढ़ रहा है तो डीजल के पेट्रोल के prices बढ़ेंगे, राइट, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है उसकी प्राइस बढ़ रही. सो प्रॉब्लम यही है कि दे डोंट इवन एक्सेप्ट इट. आई मीन वी हैव ब्लेंड 20% ethanol to the petrol. We got very what we can say cheap petrol from Russia, crude oil from Russia and other countries, right? Then we didn't get the sasta petrol. Now, when the crude oil prices are getting higher and higher every day, then we are going to get the costly petrol because crude oil is getting costlier. So है अभी तक acceptance नहीं है, but let's hope for the best. I'll get the data और अगर नहीं तो फिर I have some sources जिससे मैं बात कर सकता हूँ कि क्या है सी, राइट. तो एनर्जी क्राइसिस को उन्होंने वो किया, एड्रेस किया. सेकंड ही एड्रेसेस अबाउट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट, right. He acknowledged the conflict's adverse effect on the global economy and supply chain, stating that an inter-ministerial group meets daily to monitor the impact on Indian trade and essential commodities like fertilizer. So उनका मानना है कि this particular event has a global economic impact, right? India उससे अछूता नहीं है, and we have decided to get a ministry, right? Sorry, a group जो कि interministerial group है जिसकी meeting daily basis पे होती है to monitor this and to get the data, right? उन्होंने ये भी बात बोली. And
He also talk about the domestic resilience. Right. अब ये जो है ये थोड़ा सा डिबेट का पार्ट है. So he said that the parallel to the COVID-19 pandemic response, right, he assured that government is working to ensure global crises do not burden India's farmer and ordinary household. See, I'm not again, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने का मन नहीं होता, but that is something which I can completely say the government was 90% irresponsible during the COVID pandemic. Right, it was us who were making groups, who were sharing data कि भैया कौन सा हॉस्पिटल में कहाँ बेड खाली है, where you can find the oxygen, where you can find the medicines, where you can find the injections, right? And there were huge like long queue for the oxygen and hospital beds, and the government was not responding. And there were lots of people जिनकी death हुई है, जिनके videos हैं internet पे, who died because of lack of oxygen. And this is the same government which replied in the parliament, in the official record, that nobody died because of lack of oxygen. So, sir, if you are saying कि कोविड में हमने बहुत अच्छा काम किया था, right, and COVID pandemic जैसा resilience हमारे पास है, we can handle this. Sorry, sir, it was the public which worked, which came together to fight for each other. Government response was just 10% because they built some infrastructure, right? 90% credit goes to public and the frontline workers. You cannot take credit on this, right? So if you are saying ki current energy scenario, current particular issue, right, current economic impact, current energy crisis, everything is going to be sorted very well. We will respond the way COVID-19 में हमने response किया था. This is something जो डरावना है, right? We want you to be more responsible. We want you to be more answerable. Now, what are the things that we can understand, right? इससे कुछ चीजें जो है वो अपन इम्प्लीकेशन में ला सकते हैं. फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू बी रेडी फॉर नेक्स्ट लाइक लेट्स जो रेस्ट ऑफ द ईयर जो बचा हुआ है for next 9 months कि भैया there are going to be crisis whether that is energy whether that is food क्योंकि if fertilizers are not available if sulfur is not available if fuel is not available things are going to get messy. So we have to be ready. We have to be ready with the backup. Right. Second thing, right? Panic करने की जरूरत नहीं है. जब सब कुछ हमें ही हैंडल करना है तो we don't need to panic. Yes, the fuel cost may rise, the other thing may rise, but we have all the particular sources, all the particular method to control that particular expenditure. Right. For example, अगर जरूरी नहीं है तो बाइक का इस्तेमाल ना करें, कार का इस्तेमाल ना करें. If there is something which is very important तभी करें. एंड ईवी है अगर आपके घर में तो उसके थ्रू काम करें. एलपीजी है तो वेल एंड गुड है, मिल जाएगी तो वेल एंड गुड है. नहीं है तो इंडक्शन से सब कुछ बनाया जा सकता है. आई कैन लाइक आई कैन श्योरली गिव यू दिस पर्टिकुलर थिंग कि हाँ, श्योरिटी से इंडक्शन से सब बनाया जा सकता है. And they have coal reserve, they have other reserve, we have hydroelectricity power plant. So the power cut may not be likely there, right? So induction can be a very good option. Fourth thing, right? Be ready कि ये जो war है वो the way it is completely unpredictable. कभी ऐसा हो जाए कि तुम सुबह सुबह उठो और तुम्हें ये पता चले कि वॉर जो है खत्म हो गया, सीज फायर की बात चल रही, तो उसमें भी शॉक मत होना. चाचा ट्रम्प है, कौन सा नशा करके सो के अगले दिन क्या कर देगा इसका कोई आइडिया नहीं. तो थोड़ा सा रेडी रहो, पैनिक करने की जरूरत नहीं है. वी आर इंडियंस, मतलब वी आर द toughest breed in the world, right? We survive in hell like situations. मतलब हम रोड पे चलते हैं तो गड्ढों से मर सकते हैं, सांस लेते तो हवा से मर सकते हैं, राइट? एयरप्लेन में बैठे हैं तो वहां प्रॉब्लम है, फुटपाथ पे चल रहे हैं तो कोई थार वाला चढ़ा जाएगा. So we are living in that particular condition, so we can survive this, that's for sure. हाँ, प्रिपरेशन अपनी पर्सनल होनी चाहिए. यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर नहीं, तुम नहीं भरोसा कर सकते. एंड जब कोविड-19 का नाम आ गया था तभी मैं थोड़ा सा घबरा गया था कि नहीं भाई, that was critical. I have seen people losing their loved one, and
खैर छोड़ो, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। चलो अब थोड़ा सा इंडियन मार्केट क्रैश की बात कर लेते हैं कि कल जो इंडियन स्टॉक मार्केट में हुआ वो क्या था, and how that is going to impact and how that is going to be there. So Indian stock market experienced a significant bloodbath on March 2026. पूरे मार्च की बात हो रही है. Characterized by multiple sharp single day falls that wiped out trillions of rupees in investors' wealth. Most severe decline occurred on the 9th of March 2023 and 23rd of March 2026, right? Primarily driven by escalating geopolitical tension in the West Asia and surging crude oil prices. So दो चीजें, तो सबसे पहले हम दोनों पर्टिकुलर डेट जो लिखी गई है, सबसे पहले लेटेस्ट की बात कर लेते हैं, 23rd of March की. सो 23rd of March में जो बीएसई सेंसेक्स था, राइट, दैट अपन दोनों कर लेते हैं, 9th March भी कर लेते हैं. सो सेंसेक्स जो था, दैट इज बीइंग डाउन बाय 1836. 9th March को दैट इज 2500. यस, इतना पॉइंट नीचे गया था. जो निफ्टी है, निफ्टी 50, राइट, दैट लॉस्ट 602 during the 23rd March crash and 700 point, that is close to 3% during the 9th March crash. Now जो wealth है, अगर मैं बात करूँ 23rd of March को कुछ 14 लाख करोड़ जो है वो चले गए मेजर शेयर्स से, and on the 9th of March that was just 13 lakh crore. So overall 2 days a dip, 9th and 23rd of March have accounted for almost what we can say 27 lakh crores of a wealth erosion or wealth loss, and it's in rupees, not in dollar, है ना. So 27 lakh crore rupees ये भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है. ठीक. ओवरऑल फैशन में अगर मैं मंथली ट्रेंड की बात करूं, तो निफ्टी ड्रॉप 8% ओवरऑल बाय द मार्च. इट्स द सेकंड वर्स्ट परफॉर्मिंग मंथ सिंस कोविड 19 पेंडेमिक. सो जो हमारा लोकल निफ्टी है वो बहुत ज्यादा ही परेशानी में, देयर इज अ डिप ऑफ 8% इन द 1 मंथ. नाउ व्हाट आर द रीजंस, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, तो रीजंस में सबसे पहला तो वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट है, एंड मेजरली यही है, राइट. अ फुल स्केल एस्केलेशन इन्वॉल्विंग द यूएस, इजराइल, ईरान unsettled global market. So इसके कारण जो ग्लोबल मार्केट है, नॉट ओनली इंडियाज मार्केट, दैट इज अनसेटलिंग, दैट इज अनकंट्रोलेबल एंड दैट इज वॉलेटाइल. तो इसके कारण इंडिया का मार्केट भी उतना ही इफेक्टिवली क्या हो रहा है, लॉस झेल रहा है. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज क्रूड ऑयल प्राइस. इसको समझाने की भी जरूरत नहीं है. मैंने कल भी बोला था, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल, जो रेफरेंस क्रूड ऑयल है, दैट इज रीच टू 120 बिलियन, सॉरी, डॉलर पर बैरल, राइट. तो इसके कारण क्या हो रहा है, दुनिया भर में इन्फ्लेशन और बाकी चीजें जो है वो डिस्कशन में जा रही हैं. सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो चुकी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज है, तो काफी चीजें. देन द थर्ड वन इज करेंसी प्रेशर. हाँ, इंडियन रुपीस का जो 94 रुपीज, दैट इज इक्विवेलेंट टू $1, ये जो नया फ्रेश लो रिकॉर्ड है, दिस इज द रीजन व्हाई इंडियन करेंसी इज फेसिंग ह्यूज प्रेशर इन द मार्केट. I mean, Indian rupee is the worst performing, what we can say, currency in the Asia, and it is getting record low. प्लीज कोई भी आके ये मत बताना कि ये भी फायदे का है, नहीं, बिल्कुल फायदे का नहीं है. इन्वेस्टर्स जो है उनके पैसे जा रहे हैं, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्टर्स हैं उनके पैसे जा रहे हैं, एजुकेशन जो फॉरेन एजुकेशन है उसको महंगा करना पड़ रहा है, लॉट ऑफ थिंग इज हैपनिंग. तो इसके कारण जो है वो काफी ज्यादा हो रही है प्रॉब्लम. हैवी सेलिंग जो है, मतलब जो स्टॉक बेचने का वो है द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसे एफआईआई कहा जाता है. सो हैवी एफआईआई सेलिंग, ये जो है ये प्रॉब्लम है. सो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऑफलोडेड अप्रोक्सीमेट, मैं एफआईआई लिख देता हूँ, तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, offloaded approximate 57,000 crores, right, in the first 9 trading session in the March alone. So the foreign institutional investors जो होते हैं, banks, फंड मैनेजर्स और दूसरी चीजें, सो जब ये अनलोडिंग करते हैं, जब सेल करते हैं,
तो मार्केट को ये लगता है कि हाँ यहाँ पे पैसा लगाने के लिए सही नहीं है, सो अदर्स हैव फॉलोड द सेम ट्रेंड, राइट? तो ये एक बड़ा रीजन है। द नेक्स्ट वन, जो कि घर के घर में ही बनाया हुआ है, राइट, इज एच डी एफ सी बैंक। यस, एच डी एफ सी बैंक टर्मोइल जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, though it's a part-time, but issue is critical. HDFC is one of the largest bank of India, and if it is, if its chairman is saying there is an unethical practice, market में doubts बढ़ जाते हैं, and that is the reason कि क्यों इतना सारा पैसा जो है वो जा रहा है। Wait until you find a movie explaining how the low rupees depreciation is beneficial। तो मूवी की बात कर रहा हूँ, मैंने न्यूज चैनल्स में देख भी लिया ऑलरेडी। Nukes these days, भाविक, तुम पीछे हो गए, तुम फिल्मों में पहुंच गए हो भाई, न्यूज चैनल वाले ऑलरेडी डिफेंड कर चुके हैं इसको। नो वरी। चलो, अब इसके कारण जो डिफरेंट सेक्टर्स में इम्पैक्ट आया है, मैं उनकी बात कर लेता हूँ कि सेक्टर वाइज क्या इम्पैक्ट है। तो जो हार्डेस्ट हिट्स वो हैं, क्या कहना चाहिए, सेक्टर्स हैं, उसमें एविएशन है, राइट, right? Paints, banking, auto sectors, they are seeing sharp decline due to like a rise input cost, है ना? इंटरेस्ट रेट जो है उनके भी कंसर्न है। तो दी लाइक पेंट, उसमें भी मटेरियल तो पेट्रोलियम की बाय प्रोडक्ट यूज होते हैं। सो एविएशन, पेंट्स, बैंकिंग, ऑटो सेक्टर्स, इन सब में एक शार्प डिक्लाइन दिखा है। दे आर द वर्स्ट और द हार्डेस्ट हिट सेक्टर्स। जो रेजिलिएंट सेक्टर्स हैं, जिसमें डिफेंस इज देयर, upstream oil companies are there, they remain relatively stable, right? And banking जो है वो ओवरऑल फैशन में लो ही जा रही है। So according to the report from the Money Control, the Nifty Bank Index fell to an 11-month low, slipping below the 52,000 mark. So ये जो है ये ओवरऑल फैशन में हर एक सेक्टर को इम्पैक्ट कर रहा है, दैट इज फॉर श्योर। बट सम सेक्टर्स आर रेजिलिएंट, सम सेक्टर्स आर हैविंग मोर एंड मोर इम्पैक्ट ऑन इट। तो यस, मार्केट में चीजें चल तो रही हैं, राइट, एंड प्रॉब्लम रहेगी। नाउ माय पर्टिकुलर कंसर्न इज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वैसे ही बहुत अच्छा नहीं माना जाता। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट फॉर स्टॉक मार्केट, बट अगर शांति से टिके रहा जाए तो फिर वहां पे एक अच्छा वो रिटर्न मिलता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। गोल्ड सस्ता हो रहा है, सिल्वर सस्ता हो रहा है, मार्केट डूब रहा है, एलपीजी नहीं मिल रहा है, इंटरनेट स्लो हो रहा है, सुबह सुबह उठो तो लड़ाई झगड़े की न्यूज आती है। सो या, इट्स अ गुड मार्च। चलो, थोड़ा सा लास्ट वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट पे भी कुछ अपडेट्स दे देता हूँ तुम्हें कि क्या है क्या नहीं है ना? सबसे पहले यूएसए की तरफ से दे हैव पोस्टपोन द स्ट्राइक फॉर 5 days। पीपल आर सेइंग कि दिस इज अ पीस इनिशिएटिव और love so that the market stays stable. जो भी है, but Donald Trump announced a 5 days delays on the planned strike against the Iran power plant and energy infra. This followed his earlier ultimatum for Tehran to reopen the Strait of Hormuz at the full capacity. तो कहीं ना कहीं अगर मैं मंडे टू फ्राइडे देख लूं कि भैया मंडे टू फ्राइडे कोई अटैक नहीं हो रहा है, लेट्स से सैटरडे को शाम को हो रहा है या सैटरडे को रात को हो रहा है, तो मार्केट का जो पर्टिकुलर कंडीशन है वो तो स्टेबल रह सकता है। देखा मित्रों, राइट? सेकंड वन इज negotiation claim from the US। यस, यूएस प्रेसिडेंट ने बोला कि एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल, राइट, जो वो हैं, क्या कहना चाहिए, ईरान के, उनके साथ देयर इज अ negotiation talk that is going on। मैच इज सो गुड भाई साहब, क्लोजिंग है ना, बहुत कुछ क्लोज करना बाकी। So, Trump stated that the very good and productive discussion has taken place with Iran toward the complete and total resolution of the hospitality। So, उनका ये कहना है कि there is a high ranking official जिनके साथ उनकी डायरेक्ट बात चल रही है for the ceasefire and for the total, क्या कहना चाहिए, resolution। But ईरान strictly mentioned कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, right? Iranian official, including the parliamentary speaker, that is like Ghalibaf,
dismissed the talk as fake news intended to manipulate the global oil and financial market. जैसा कि मैंने कहा, ईरान ने बोला कि he is spreading the fake news, right, so that he can manipulate the global oil market and दिस पर्टिकुलर मार्क जो पर्टिकुलर वो है फाइनेंशियल मार्केट्स उनको ये क्या कर सके वो कर सके मतलब मैनिपुलेट कर सके कि भाई साहब बहुत बढ़िया चल रहा है सून देयर इज गोइंग टू बी पीस तुम तो बढ़िया ट्रेड करो खूब सारे पैसे लगाओ राइट जो मिलिट्री एक्शंस है वो भी थोड़े से स्ट्रांग हुए हैं सो कुछ मिलिट्री अपडेट ले लेते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ सो सबसे पहले तो बात करते हैं यरूशलेम की किसकी बात करते हैं यरूशलेम की तो so the loud blasts were reported over the Jerusalem earlier, last night. Following the Iranian missile fire, a building was damaged. No casualties were reported from the Israel. So एक पूरी की पूरी बिल्डिंग डैमेज हुई है लेकिन कैजुअलिटी नहीं हुई है ठीक है सो यरूशलेम में एक्सप्लोजन हो रहे हैं इसराइल जो है वो नहीं रुक रहा है यस the news has Al Jazeera strictly reported that despite the US pause Prime Minister Benjamin Netanyahu confirmed that Israel would continue its wide-scale strike against the targets in Iran and Lebanon to protect its national interests. So Israel जो है वो कंटिन्यू रखेगा अपना अटैक ये गुड कॉप बैड कॉप खेलने वाली स्ट्रेटजी दिख रही है एंड ईरान का जो पर्टिकुलर रिटेलिएशन है वो भी है सो Iranian drone and missile continue to target the Gulf nation Bahrain Saudi Arabia Kuwait UAE they have seen a fresh attack overnight राइट और उसके बाद द लास्ट फ्रंट जो है वो है लेबनान का सो लेबनान के लिए न्यूज आई है कि इजरायली फोर्सेस डिस्ट्रॉयड द डिफरेंट ब्रिजेस अराउंड द लितानी रिवर सो ये पर्टिकुलर रिवर वो है जो साउथ लेबनान को जोड़ती है सो जो लितानी रिवर है उसके अराउंड जितने भी ब्रिजेस थे उन सबको वो कर दिया क्या कहते हैं डिस्ट्रॉय कर दिया सो द कनेक्शन है ना थ्रू द रेस्ट ऑफ द लेबनान दैट इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड सर वेयरिंग लो कास्ट टी शर्ट इन दिस इकोनॉमी भाई गिफ्ट है यार राइट हाँ मतलब मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ गिफ्ट मिल जाता है प्यार है लोगों का तो उनको दिखाना पड़ता है अमीरी है ब्रो अमीरी चलो पॉइंट पे आते हैं हाँ इकोनॉमिक इम्पैक्ट मैं वापस बता रहा हूँ $120 पर बैरल जो है आज क्रॉस कर जाएगा प्रॉपरली राइट सो ट्रम्प का जो अनाउंसमेंट था फॉर द स्ट्राइक डिले द ब्रेंट क्रूड ऑयल प्लमेंटेड बाय अप्रोक्सीमेटली 11% राइट सो थोड़ा सा 11% की सुधार हुई है एंड दैट इज कुछ 110 के आसपास जो सॉरी 110 के आसपास वो जाके रुका बट अगेन रीचेस टू 120 सो ये जो पर्टिकुलर ईरान का डाउट था कि दिस पर्टिकुलर फेक न्यूज ऑफ peace talks and a resolution is because they want to stabilize the oil market and financial market that looks correct after the statement market actually stabilizes and oil prices reduces बट जल्दी ही ये पर्टिकुलर बबल भी फूट जाएगा एंड दैट इज समथिंग जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा ना हो एंड वी कैन सी अ क्विक रेजोल्यूशन क्विक solution of this particular problem casualties are continuously increasing Iran में 2000 plus people have died reportedly died right some data suggesting 1200 to 1500 some are suggesting 1500 to 2000 some are suggesting 3000 even because there is a huge number of strikes 2000 plus looks more logical क्योंकि इसराइल सॉरी अल जजीरा की ग्राउंड रिपोर्टिंग ने ये चीज वो की है लेबनान में there is a 1000 plus fatality right जो लास्ट ऑपरेशन हुआ वहां से यूएस ने अभी भी अपने 13 मेंबर्स ही रखे हैं इसराइल हैव स्टार्टेड रिपोर्टिंग द डेथ यस ये दिस पर्टिकुलर डेटा इज नॉट फ्रॉम मतलब नॉट फ्रॉम द ऑफिशियल्स बट देयर आर पीपल हु आर ट्रैकिंग द डेटा ऑफ burial places and places जहाँ पे लोगों को फाइनल रिचुअल्स किए जाते हैं तो वहां पे दे आर गेटिंग अप्रोक्सीमेट 800
to 1000 people who lost their life in Israel. ये अभी भी कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, बट जो मैंने अभी रिसेंट कुछ न्यूज़ देखी थी उसमें आया था. Israel, on the other hand, they started reporting about the wounded people. For example, जब डोमिना में और उसमें अराद में अटैक हुआ था, तो they reported approximate 190 people have been injured. So अगर 190 injured हुए हैं, तो there are going to be some casualties. So they started reporting it. So let's hope for the best. कि कम से कम रहे. I mean वही है वॉर. बूढ़े जो है वो प्रोवोक करते हैं, यंग लड़ते हैं, and the life that is being lost is the normal civilian and the young people. So है ये problem है. So these were the three most important news for today. Let's have a recap of the entire newspaper. Look at how he's smiling. I mean, I love this guy. One of the most chill guy, I think. मतलब I like him. So इनको बना दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स. चाचा ट्रम्प जो है वो अपनी बकवास कर चुके हैं कि 5 दिन तक हम अटैक नहीं करेंगे, ये वो. The indices plumb to 2.5%. Nifty may be in a bear grip. We have already discussed about the Indian market crash, right? We have discussed about the delimitation and how we are going to get the women reservation bill implemented. Right. Gas crisis may be easing as two more Indian vessels crosses the Strait of Hormuz. I hope ऐसा हो. There are now in total there are 6 vessels the Strait of Hormuz cross कर चुके हैं इंडिया में, and they all 6 are getting 1 days like one days each of oil and gas reserve. So let's hope for the best कि जल्दी से जल्दी और अच्छा solution मिले. मैंने बोला ना कि इफ यू हैव गट्स टू टॉक टू द काउंटर पार्ट, देन जल्दी से जल्दी सोल्यूशन मिलता है. राइट. फिर केरला असेंबली पोल, देयर आर 1202 कैंडिडेट which filled the nominations. 9 तमिलनाडु पुलिसमैन फाइंड guilty of 2 custodial death. राइट. ये 6 साल बाद जजमेंट आया है कि भैया जो वो था तूतीकोडी डिस्ट्रिक्ट में 2 लोगों को मारा गया था. Because of that, 9 policemen were found guilty and they are soon going to be charged from the murder. Impact of West Asian war likely to felt for a long time, says PM in the Lok Sabha. So we discuss about Prime Minister Modi's address to the Parliament, yesterday's address to the Parliament. उसके implications क्या हैं? Anil Ambani bag fraud case, CBI ED shows reluctance. BJP Congress spar over the fuel prices in Lok Sabha debates on the finance bill. होगा भाई. कांग्रेस के पास एक अच्छा वो है. That's we can do this. थोड़ा मेरे को टाइम मिल जाए तो भैया अपना काम हो जाए. तो क्या आई एम गेटिंग योर कमेंट रेडी. राइट. चलो. So, US-led Pax Silica is a step toward the digital colonialism. जो वो है कांग्रेस एमपी दिग्विजय सिंह, उनका ये मानना है कि जो हम पैक्स सिलिका ज्वाइन कर रहे हैं, दिस इज द ग्रुप दिस इज गोइंग टू गेट इनटू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिलिकॉन चिप सिलिकॉन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन. तो वो हमारे लिए एक मॉडर्न कॉलोनिज्म, एक डिजिटल कॉलोनिज्म होगा. असेंबली पोल्स, ये 3-4 पेज जो है वो पूरी तरह से इलेक्शन रिलेटेड न्यूज से भरे. सो इफ यू वांट टू फॉलो इलेक्शन क्लोजली, कर लो. यहाँ पे सिर्फ तुम्हें नेताओं के वादे मिलेंगे एंड तुम्हें पता है वादा टूट जाता है. चलो. सेंटर टू अमेंड द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटर रेगुलेशन एक्ट, जो एफसीआर है उसमें अमेंडमेंट जो है वो आने वाला है. राइट. यस. जिससे इलीगल फॉरेन डोनेशन ना मिले. Greater cooperation needed between India and Russia, says Jaishankar. Most probably Modi is going to Russia in coming months. है ना. मतलब रशिया की विजिट उनकी डिसाइड हो रही है. आज या कल में ये चीज वो हो जाएगी. दो एससीओ से अपने स्टेटमेंट को अलग करना, ब्रिक्स में कोई खास डिस्कशन ना करना अबाउट दिस कॉन्फ्लिक्ट, दिस मेक इंडिया इनटू अ वीकर स्पॉट, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. Greater cooperation is needed between India and Russia. See, again, government decided to go with pro-American stance, right? है ना. प्रो इसराइली स्टांस. एंड बाद में कौन आया साथ देने के लिए, दैट इज रशिया एंड ईरान वाले लोग. सो यस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भाई इतना इंक्लिनेशन नहीं होना चाहिए. ठीक है.
अब अल्टीमेट वही आ रहा ना कि रशिया से दोस्ती वापस बढ़ानी पड़ी, रशिया से तेल खरीदना पड़ा, ईरान से दोस्ती बढ़ानी पड़ रही है। खैर, एससी गिव सेंटर 4 वीक रिस्पॉन्ड टू प्ली अगेंस्ट आर्बिट्री हाइक्स इन द एयरफेयर। ये भी एक अच्छा है भैया, हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाएगा जो रेगुलर एयर ट्रेवलर्स हैं। फ्रॉम देम वादा टूटने के लिए बना, दैट्स इट, पॉलिटिकल स्टांस है। सॉरी। बैटल ऑफ बंगाल, द टीएमसी इज फाइटिंग फॉर एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट। यस, इस बार तमिलनाडु की जो इलेक्शन है वो थोड़ा सा क्या रहने वाला है, क्रिटिकल रहने वाला, मजेदार रहने वाला है, राइट? तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेना। बाकी आई डेंट फाइंड एनी मच न्यूज। इकोनॉमिक पीस में है कुछ न्यूज जो हमें वो करना चाहिए। बेंचमार्क इंडाइसेस फेल 2.5%, ये अपन बात कर चुके हैं। फ्रॉम द लास्ट 5 months, the net foreign direct investment flow is negative for India. हाँ भैया, रेगुलरली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ही होता जा रहा है। सो इंडिया के लिए ये एक प्रॉब्लम है। द गोल्ड फ्यूचर डाइल्स 10% amid the global gold सस्ता रहा। लोकसभा to send corporate law amendment bill 2026 to the joint public parliamentary committee, राइट? चलो, local LPG output now at 50 to 60% consumption requirement says official। इस पे मत जाना है ना, जब भी यहाँ पे लिखा हो, राइट, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम में होती है। जैसे यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 50 to 60% ऑफ कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है। तो क्या हमारे पास इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है? जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री पेट्रोलियम नेचुरल गैस के, जिनका नाम है सुजाता शर्मा, उन्होंने ये चीज बताई। बट स्टिल प्रॉपर डेटा जो है वो थोड़ा सा हमें मिलना चाहिए। क्या कह रहे हो? Kashmiri donated huge amount to Iran. Iran said we would never forget to diverse Indian diverse politics. Uh, see, Daksh, I think the kind of crisis Iran is facing, है ना, everybody should donate and everybody should help. गवर्नमेंट का अपना स्टैंस है, दैट इज समथिंग। हम नहीं कहते कि हम साथ में हैं, बट again, there are people, there are intellectuals who understand that Israel and USA are wrong, and if they are donating, that is completely right, welcoming। मैं तो नहीं कहता कि ये चीज गलत है, क्योंकि हम ह्यूमैनिटेरियन एड तो देते ही हैं, राइट? तो वो तो चीज होनी ही चाहिए। तो मुझे तो अच्छा लगता है, कश्मीरीज आर वेलकमिंग पीपल यार। आई हैव लिव्ड इन कश्मीर फॉर 2.5 months 3 months while traveling, they all are very welcoming people। वो जो कश्मीर की एक इमेज बनाई गई है ना, अ, कि भैया वो ये नहीं बोलते कि खुदा हाफिज गुड नाइट या इंशाल्लाह कश्मीर आजाद होगा, दैट इज समथिंग जो कि हार्डली 1-2% पॉपुलेशन बोलती है। रेस्ट अदर्स दे आर वेरी हैप्पी विद बीइंग इंडियन, when being with the India, there are 1 or 2% people who shouts a lot, and that is why ये चीजें आती हैं। But Kashmir is a beautiful place, Kashmir is an integral part of India, and Kashmiri people are very welcoming, very good hearted, and खाना तो अलग है ही है। खूबसूरती की तो बात ही मत करो कश्मीर की, धरती की जन्नत, धरती का स्वर्ग है। सो कश्मीरीज आर ऑलवेज वेलकम, डेफिनेटली। हाँ हाँ, मैं तो हमेशा हेल्प के लिए वो करता हूँ। नाउ लेट्स गेट इनटू सम फन पार्ट, है ना? ठीक, इस न्यूज को जरा ध्यान से देखो, इस्लामाबाद से ये न्यूज है। पाकिस्तान vows to root out terrorism as Afghan Taliban rules near end। मतलब पाकिस्तान इज vowing to root out terrorism। भाई, अभी वैसी एनर्जी क्राइसिस है, तुम वर्क फ्रॉम होम एलिमिनेट कर दोगे तो कैसे काम चलेगा? खैर, जोक्स अपार्ट, बट इसको कहते हैं मालिक को ही अपना कुत्ता काट लेना। यस, when you spread terrorism in India, right, you didn't talk about it, you didn't saw how innocent and civilians were dying, but now when you are facing such kind of attack, you are saying कि भैया हम तो जड़ से खत्म कर देंगे। Okay, Chacha, this is what we call karma, right? So, Iranian guard directing Hezbollah operation in Lebanon, says PM. Gulf nation is being targeted in new attack. Iran threatened to mine access routes. So, बहुत सारी चीजें जो है चली रही है, अपन ने ऑलमोस्ट डिस्कस कर ही लिया था। एंड बाकी रेस्ट कोई खास वो नहीं है डिस्कशन के लिए। आज का आईपीएल टॉपिक जो था वो आरसीबी था। सो आरसीबी फैंस, तुम ये एडिटोरियल पढ़ सकते हो, रेस्ट आई डिडंट हैड एनीथिंग।
to discuss. Chalo. So this is it from my side for today. Again, sorry यार बहुत सारा time. Asim Munir is positioning himself as the mediator between Iran and USA. I mean, this is the same Asim Munir who got talked to my hand wala issue. जब इनने बोला कि people who loved Iran, why not they should go to Iran. तो एक शिया मौलाना थे, scholar थे. He said कि you love Israel and America so much, so what are you doing in Pakistan? You can go to America or Israel, right? So Asim Munir, Donald Trump, they all are kind of joker. Benjamin Netanyahu is also seems to be a joker. जिस तरीके से हो रहा है काम, राइट? मैंने कल बोला ना, सुबह उठ के भाई कहता है कि दुनिया हिला देंगे, राइट? शाम आते आते भाई कहता है भाई यार लगी पड़ी है, लोग प्लीज हेल्प करो, कभी नेटो से, कभी चाइना से, कभी यूक्रेन से. तुम यकीन नहीं करोगे, मेरे पास भी डोनाल्ड ट्रम्प का फोन आया था कि यू शुड हेल्प अस, एंड आई वाज लाइक कि माय फ्रेंड, इंडियाज फ्रेंड, यू आर नॉट माय फ्रेंड एनीमोर, राइट? सो चलो, दिस वाज इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर. I'm compiling the most important articles on informations, right? जो रोज के रोज मैं इकट्ठा करता हूँ वर्ड फाइल में. So by the end of the month, I'll compile those important news and relevant information, and I'll try to make it a PDF. और मैं उससे फिर ट्राई करूंगा कि अपन टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करें. Got it? So this is it from my side for today. I'll see you in the next session. Till then, have a great day ahead. Maze karo. Have a good health, good mental health. Good day, guys. See ya. Thank you, Rishparna. Thank you.